Hi guys, Nahid here. In today's class, we'll be discussing role of press, which is History Chapter 2. Okay, so let's discuss role of press. Press here means printing media, which may include newspaper, magazine, journal, etc., etc. So let's see how press has influenced on India's nationalism. That's what we are particularly discussing in this chapter. I have covered other topics of this chapter, so if you haven't checked that already, you can go back and see the description box out there and get the links and watch the videos and keep yourself updated. Also, I would like to tell you that subscribe to my Telegram channel, the link of which is given below. As you can see, it's flashing on the screen. So go there, join that channel so that you get all the notes. Okay, now let's come to the topic, role of press. As I said, it's printing media, means it includes all the newspaper, magazine, journal, etc. Here you can see it was the Europeans who first introduced the printing press in India, which means the European people, okay? The European people first introduced the printing press in India. Indian people didn't have any idea about the printing press like the newspapers that we read today. So that leads to the first newspaper in India that was ever published was Bengal Gazette. So that's something you should, underline, you should mark this. And it was published by a guy named James Augustus Hickey in the year 1780. So that's very important. That's the first, Indian newspaper. So you underline that. During the next few decades, many English newspapers made their appearances. So after that, that was the first kind of English newspaper. After that, many newspapers, showed their faces in the upcoming years. These newspapers created to the intellectual needs of the Europeans in India, which means in these newspapers, like after Bengal Gazette, there were many newspapers and they only talked about the intellectual needs, means they concerned about the intellectual needs of people living, like the British mainly concerning the European people. It did not reflect anything of the Indian, what was happening with the Indian people. It didn't reflect any of those things. Indian public opinion was hardly reflected in these newspapers, as you can see what I just said. Indian opinion was never reflected in these newspapers. In the newly educated Indians gradually realized the importance of printing press as a powerful means of mass of communication. तो जो लोग Indian जो educated बंदे थे, they understood that printing press जो है, it's a very powerful tool with which we can do mass communication. Through this we can communicate with our people, we can educate them, we can make them understand what's wrong, what's actually happening wrong. Thus, the later half of 19th century witnessed the rapid growth of vernacular newspapers in India. So because of that, the later half of 19th century, we saw many vernacular newspapers appearing in India. Vernacular यहाँ पे मतलब है भारतीय local languages में, मान लो बंगाली है, उड़िया है, मराठी है, इन ऐसे लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स जो हैं वो हम 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ. These newspapers voiced the sufferings of the native people and exposed the evils of the British imperialism. So what did we see in these newspapers? These newspapers actually reflected the problems of the people, how people were suffering, and also it exposed the evil nature of the British imperialism. British का जो राज चल रहा था, British का जो evil काम जो गलत कर रहे थे हमारे से, जो exploitation ये जो उनका nature है, ये भी भारतीय लोगों के सामने आया because of these newspapers. क्योंकि इसमें जो लोग article वगैरह लिखते थे, they reflected all these things. It was due to the efforts of the vernacular press that the newly developed nationalism did not remain confined to the intelligentsia and reached the common people throughout the country. So vernacular newspaper की वजह से ही जो है, जो intelligentsia का यहाँ पे मतलब है awareness. मैं अगर कहूँगा तो awareness जो है वो सिर्फ intelligent लोगों तक सीमित नहीं रहा, it reached the common people as well throughout the country. So the common people जो लोग जो आम आदमी थे तुम्हारे मेरे जैसे, they also came to know a lot about what was happening and उनको एक voice मिल गया अपने लिए.
कुछ भी रॉन्ग हो रहा था या फिर क्या होना, क्या सही स्टेप है. These newspapers were like educators. Obviously there were people behind them. The British government became conscious and legal restrictions were imposed upon the Indian press. तो धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, they became aware of this, like they understood the conspiracy. British government understood the conspiracy, so they became very conscious. वो थोड़े चालाक बन गए, उनको समझ में आ गया, and they put some legal restrictions on these vernacular newspapers. Vernacular newspapers के ऊपर जो है restrictions लगा दिए. इसका मतलब अब अगर वो चाहते भी थे, even then they could not publish anything against the British government. Now they were like keeping an eye on these local newspapers. Let's see more here. The government became convinced of the role played by the press towards Indian Renaissance and growth of Indian nationalism. So government convinced means government here. Government by government I mean the British government. They understood that this vernacular press, like ये जो press है, printing जो media है, it's playing a great role for Indian Renaissance, which means Indian लोगों को rebirth दे रहा है, like giving them a consciousness. And इसकी वजह से जो है बहुत सारा nationalism जो है वो भी ग्रो हो रहा है. ये बात जो है ब्रिटिश लोगों को like finally they came to a realization, and that's why they decided to increase their control over the vernacular press. And because of that they decided that कि हम क्या करेंगे, vernacular जो press है उसके ऊपर हम और ज़्यादा जो है कंट्रोल करेंगे, which means we will put more restrictions on the vernacular press, क्योंकि इसको तो रोकना होगा, because इसके वजह से ही लोग जो हैं वो चालाक बन रहे हैं, people are getting like aware. Okay, Lord Wellesley imposed censorship on the Indian press by the Censorship Act 1799. So Lord Wellesley उस समय के जो है गवर्नर थे, या आई वुड से दैट वाइसरॉय, उन्होंने जो है सेंसरशिप, ये जो चीज़ है सेंसरशिप, ये जो टर्म है, ये इंडिया में लागू कर दिया विद सेंसरशिप एक्ट इन 1799. ओके, बेसिकली मैं बताता हूँ सेंसरशिप होता क्या है. फिल्मों से उदाहरण देता हूँ. किसी फिल्म में अगर बहुत ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, गाली हो रही है, या फिर कोई भी एक सॉन्ग ले लो जिसमें थोड़ा बहुत गाली वगैरह है, तो सेंसरशिप बोर्ड क्या करता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कहता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द लाइक जनरल पब्लिक, ये आप पब्लिश नहीं कर सकते. तो उस समय में दे इम्पोज सेंसरशिप ऑन द वर्नाकुलर प्रेस, सो दैट द वर्नाकुलर प्रेस वुडंट बी एबल टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. मतलब वही है कि जो आम जनता है उसको कुछ पता चलेगा नहीं तो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे ना. वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दे handicap the entire situation. Now in 1807 Lord Hastings, Lord बदल गए मतलब गवर्नर बदल गए, ठीक है, Lord Hastings आ गए. Now what happened once he came, let's look at that now. Abolished the Censorship Act but prohibited publication of articles which might tarnish the image of the British government in India. तो जब ही केम इन पावर, उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप को हटा दिया. ओके, ही जस्ट एबोलिश्ड सेंसरशिप एक्ट. उन्होंने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑन द आर्टिकल्स दैट यू रीड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ओके, वर्नाकुलर लैंग्वेज, दे शुड नॉट टर्निश, विच मीन्स डिफेम द इमेज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. अगर हमें लगे कि गवर्नमेंट के खिलाफ तुम लोगों ने कुछ लिखा है, देन वी विल टेक एक्शन. इन 1823 John Adam, the acting governor general, reversed the policy of Lord Hastings. तो Lord Hastings ने इसको हटा दिया था. उसके बाद एक्टिंग जो है गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड एडम, क्योंकि when he was like removed from his post as supposed to be another governor, meanwhile वो आते उस वक्त में जो है जॉन एडम जो है he was the acting governor. So when he came, he again imposed the control, the censorship act on the vernacular press. इसके ऊपर फिर से जो है उन्होंने restrictions लगा दिए, which means they again cannot like post anything. vernacular basically जो newspapers है वो अब publish नहीं हो सकते, ऐसा कहा. उसके बाद देखते हैं राजा राम मोहन रॉय vehemently protested. उस समय में राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. If you haven't checked the video, you can check, it's there on my channel somewhere.
सो राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट. उन्होंने कहा ये तो हमारा बोलने का अधिकार है, यू कैन नॉट जस्ट snatch away our basic right. This is our basic right. You cannot just take it away from us. As a mark of protest, he stopped for the time being the publication of his weekly 𝒕𝒉𝒊𝒔. तो ये भी एक जानने वाली चीज़ यहाँ पे आती है. 𝒕𝒉𝒊𝒔 जो है it was actually published and run by राजा राम मोहन रॉय. तो उन्होंने इसका भी जो है उस for the time being is temporarily इसका publication भी उन्होंने बंद कर दिया था, which was like used to be in the local vernacular languages. उसका publication उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि बंद तो करना ही पड़ेगा, because according to the acting governor ये हम चालू नहीं रख सकते. He pleaded before the Calcutta High Court and the Governor General of Bengal for the removal of these restrictions on Indian press. वो Calcutta High Court पर गए. Okay, pleaded मतलब he requested. कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके जजेस के सामने वहाँ पे रिक्वेस्ट की पिटिशन डाली दैट ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने इंडियन प्रेस के ऊपर लगाया है, ठीक है, इंडियन प्रेस के ऊपर लगाया है, प्लीज़ रिमूव देम, इनको हटा दीजिए, बिकॉज वी नीड टू बी रनिंग, वी नीड टू बी पब्लिशिंग स्टफ इन आवर लैंग्वेज. उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट. इन 1835 द officiating Governor General Charles Metcalfe repealed these restrictions and became liberator of Indian press. उसके बाद एक्टिंग गवर्नर के बाद जो असल में जो गवर्नर थे वो आए, उनका नाम था चार्ल्स मैटकाफ. उन्होंने आके फिर से रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दिए एंड ही केम टू बी नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस. इंडियन प्रेस को आज़ाद करने वाले व्यक्ति के नाम से वो जाने जाने लगे. This helped in growth of vernacular press in India. उसके बाद से vernacular press जो है इंडिया में थोड़ा ग्रो करने लगा. Okay, let's read more. The vernacular press, highly critical of the policies of the British government in India, had succeeded in building a public opinion against the colonial rulers. तो vernacular press के वजह से, okay, because they were very critical in their policies. ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ थे उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वो लिखा करते थे अपने जो है मैगजीन्स या अपने जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में, जर्नल वगैरह में. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वेर सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अप अ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर्स. तो सब लोगों का जो है एक इकट्ठा एक ओपिनियन जो है वो बनाने में वो सक्षम रहे. एंड दे बिकेम सक्सेसफुल टू create an opinion for all the common people who were living. आगे देखेंगे. In this regard, the newspapers published from Bengal made noteworthy contribution. इसमें जो है बंगाल से, which we mean वेस्ट बंगाल से जितने भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए उनका बहुत ही ज़्यादा noteworthy contribution है. कुछ पेपर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, you must underline all of them, जैसे बंगदर्शन, संजीवानी, आर्य दर्शन, अमृता बाजार पत्रिका, published from Bengal during the second half of 19th century, served as powerful instrument in rousing political consciousness among the people. तो इसके वजह से इन सारे कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम हैं. They were mainly published in the second half of 19th century, and because of them, you know, लोग जो है politically conscious बने and लोग जो है aware बने वो was wrong. कॉलोनियल पावर एक्चुअल में क्या है, क्या ये लोग कर रहे थे, इन सारे चीज़ों को लेके जो है लोग थोड़ा अवेयर होने लगे. सो लेट्स सी मोर नाउ. आफ्टर 1861 famines had occurred in many places. We are here. Famine had occurred in many places in India. Many people were dying because of food scarcity. Famine is literally a food scarcity situation where you don't have a lot of food. कुछ ड्रॉट हो सकता है, कुछ दूसरे कारण की वजह से फूड का जो है अवेलेबिलिटी कम हो जाना. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज दिस famines, because a lot of people were dying because they didn't have food. The Indian newspapers criticized the failure of British government. उस वक्त में जो vernacular जो पेपर्स थे, they criticized the British government in India. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. एंड एट दैट टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड लिटन. बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इन न्यूज़पेपर्स ने कि आप लोग जो है इस सिचुएशन में टैक्स इम्पोज मत करिए, इंडियन लोगों की मदद करिए, यू नो, अपने सब्जेक्ट्स की तरफ थोड़ा देखिए, थोड़ा रहम खाइए, सारा लेके, यू नो, दे रोट मेनी आर्टिकल्स, मेनी थिंग्स.
इन एक्सटेंडिंग रिलीफ मेजर्स अमंग द पीपल, तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो है रिलीफ मेजर्स लेने चाहिए, यू शुड गिव सम रिलीव्स टू द पीपल सो दैट दे कैन सर्वाइव। खाली आप अपने सब्जेक्ट से जो है टैक्स इम्पोज करेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा। इन रिटेलिएशन, एज यू कैन सी हियर टू दिस, लॉर्ड लिटन passed an ill-famous vernacular press act in the year 1878। इसके अगेंस्ट में लॉर्ड लिटन जो है, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉर्ड लिटन ही पास्ड ए वेरी क्रूशल और आई वुड से अ वेरी बैड एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर एक और ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक एक्ट उन्होंने लगा दिया था। लेट्स फाइंड आउट अ लिटिल। इट वाज अ ग्रेट ब्लो टू द वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस को इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑल ओवर इंडिया मैनी प्रिंटिंग प्रेसेस वेर क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ दैट। मैनी प्रिंटिंग प्रेसेस दैट वेर ऑलरेडी रनिंग इन इंडिया वो बंद हो गए। फॉलोइंग दिस printing of papers like Hindu from Madras, Kesari from Bombay, Amrita-Bazar Patrika from Calcutta were stopped. इसकी वजह से ये सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, as you can see here the names of these newspapers, all of these newspapers had to stop, क्योंकि ये सारे newspapers जो हैं all of them were vernacular newspapers, they had to stop. To escape itself from the clutches of the Gauging Act, the Amrita-Bazar Patrika changed itself to an English paper. तो इसके चक्कर से बचने के लिए जो ABP पत्रिका जो था उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, एंड दे नॉट द नेम फ्रॉम द मीडियम बंगाली से उन्होंने अपने आप को जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जस्ट दैट दे कुड सर्वाइव उस वजह से। आई थिंक वी हैव कम टू द लास्ट पैराग्राफ हियर। इन 1878 लॉर्ड लिटन पास द आर्म्स एक्ट। उन्होंने उसी साल में जो है आर्म्स एक्ट भी जो है वो भी पास कर दिया था। एंड क्या हुआ उसकी वजह से? इट प्रोहिबिटेड द इंडियंस फ्रॉम कीपिंग एनी आर्म्स। इस एक्ट के मुताबिक नो इंडियंस कैन कीप एनी सॉर्ट ऑफ आर्म्स, किसी भी तरह का हथियार जो है इंडियंस नहीं रख सकते थे। इट्स इंटरेस्टिंग दैट द एक्ट्स पास्ड बाय लिटन were not applicable to the Europeans living in India but were meant only for the Indians. So this is very interesting here, because this act was only meant for the Indian people, okay, but not for the Europeans living in India. तो यूरोपियंस लोग जो है वो गन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन जो है वो किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकते। दिस इज़ लाइक बेसिकली एक बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा एक्ट है, जिसके मुताबिक only I get affected, others don't get affected. The reactionary policies of Lytton exposed before the Indian public the true nature of the British rule and made a mockery of the British policy of equality before law. इसकी वजह से जो है ब्रिटिश का जो पूरा एटीट्यूड है, पूरा जो पब्लिक एक एटीट्यूड है, उसका मजाक बन गया। became a mockery is more like मजाक बन गया। and equality before law ये जो सबको बोला करते थे ये सामने आ गया, and people came to know that there was no equality. And Lytton's Vernacular Press Act and Arms Act provoked a strong wave of reaction and prepared the Indians to fight and to preserve their self-respect. इसके वजह से लॉर्ड लिटन के इन दो एक्ट्स की वजह से, वन द इल फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो उन्होंने लगाया था, जिसके मुताबिक बहुत सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स को बंद होने पड़े, एंड आर्म्स एक्ट इसके मुताबिक इंडियंस कुड नॉट कीप एनी आर्म्स, किसी भी तरह का वेपन्स नहीं रख सकते। इसके वजह से पीपल रिएक्टेड एंड दे केम टू फाइट फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, एंड पीपल अंडरस्टूड दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स फर्स्ट, इट्स आवर कंट्री, व्हेन वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर पीपल एंड वी नीड टू most importantly develop an opinion and a kind of a unity. So with that we finish the role of press. I hope you understood. If you do have any questions, leave them down below and subscribe to my Telegram channel for notes and every other updates. And okay, so bye bye for now. I'll see you with a new video.